produce and broadcast much higher quality content. What will this mean for the broadcast center of the Olympic Games? Will we still need one? AI has the potential to revolutionize the spectator experience. Augmented and virtual reality are already changing now how fans consume sport. AI is going to accelerate and enhance this. This spectator experience will be dramatically more immersive and more customized to the individual. In the end, every spectator can be the director of their own viewing experience. Will spectators still look for the experience together in a stadium? Or will they prefer to enjoy it just by themselves at home? Will there still be the collective memory of the iconic sporting moments that live in the hearts of generations of sports fans like us? These are just a few features of this AI future. Over the past year, I have delved into literature and asked experts to find out what opportunities AI will bring to sport. After reading countless articles and books and speaking with some of the brightest minds, I can tell you, not one of them is at this moment thinking about the impact of AI on sport. Here is our opportunity. If we are starting this discussion now, we can still contribute to shape this AI future for sport. As we did with the Olympic agenda, we can change before we are being changed. If we do not address this issue now, then the purely technological and commercial interests will come over us like a tsunami. To seize this opportunity, it needs a change in mindset. The younger generation has a completely new way of thinking. They are living digital lives right now. We must not ignore their thinking if we do not want to jeopardize our own future. We must empower them to guide us with their young mindset. We have to be in the driver's seat. We have to devise a holistic analysis of the opportunities and risks of AI and then take action immediately. I'm happy to inform you that this work is already underway. If things go well, you may see some first consequences of this already in Paris, and you will learn about it tomorrow during our session. For the medium to long-term future, our newly established AI working group of experts will guide us. They have the task to prepare an extensive overview of the opportunities and risks of AI for the Olympic movement, going far beyond what I have just tried to outline. The imperative of our Olympic agenda is change or be changed. Another important principle is sport needs to go where the people are. This is true for both worlds, the real
and the digital one. Today, sport has to compete for the time and attention of young people. Therefore, we have to reach out to the youth where they are in this digital world. This is not just a technological imperative, this is also a demographic imperative. The launch of the Olympic Channel in the framework of Olympic Agenda 2020 was our first step in this direction. This has proven to be very successful. Today, we can be very proud that our digital platform, Olympics.com, has seen hundreds of millions of unique users since the beginning of the IOC digital journey, with an all-time high of about 200 million unique users only during the Olympic Games Tokyo 2020. Also on social media, we have seen significant growth with 110 million followers across our channels and a monthly average of 500 million social media engagement. Industry leaders are noticing our progress. One example is that we were just now awarded with the YouTube Creator Award, joining the elite club of their most popular channels. Another dimension of this digital revolution is esports. There are 3 billion people playing esports and gaming around the world. It is estimated that over 500 million of them are interested specifically in esports, which includes virtual sports and sports simulations. What is even more relevant to us, a majority of them are under the age of 34. This is why we took the strategic decision to engage with esports in a holistic way. We choose an approach that would allow us to be active in the esports space while staying true to our values that have guided us for over a century. With respect to esports, our values are and remain the red line that we will not cross. Our crystal clear position is gaining more and more respect also in the esports community. One of the leading publishers even adapted their popular game to conform fully with our Olympic values, so that players shot at targets, not at people. Our first approach to this community was the organization of the Esports Forum 2018 in Lausanne. Next, we set up an eSport liaison group to have a platform to engage with all the eSport stakeholders. Following this, we developed the Olympic Virtual Series in 2021, our first pilot venture in esports. Building on the learnings from this Olympic Virtual Series, we then launched the Olympic Esports Week in Singapore earlier this year. In Singapore, we saw proof that our holistic approach is working. We successfully brought together the Olympic and the esports communities. A highlight was the thrilling live finals, created in collaboration with IFs and publishers. Over 130 players from across the globe came together to compete in the Olympic spirit on the global stage in 10 mixed-gender category events. Players were cheered on by a full house of fans, with all the action streamed online. Overall, the Olympic Esports Series attracted over 500,000 unique participants.
The Olympic esports series generated more than 6 million views of live action over all channels, with 75% of views from people aged 13 to 14. This was a promising start, but it is just that, a start. It is like in any sport. After even a promising start, the real race still lies ahead. To compete successfully in this race, I have asked our new IOC Esports Commission to study the creation of Olympic esports games. AI and esports, these are our two opportunities. To seize these two opportunities and to manage the risks, we need a new mindset. We need the mindset of the young people. We have to trust and to empower them, because the pace of change will be exponential. It is change or be changed once again. In all these changes, we have to be guided by our values as expressed in our Olympic Agenda 2020+5. Since its adoption in March 2021, it already had a significant impact on the IOC and the wider Olympic movement. This is why a major focus of this session will be a midway evaluation of what we have achieved so far, and we will look ahead at what still needs to be done. In this respect, the Olympic Games Paris 2024 will be an excellent demonstration of the enduring relevance of our values in our times. The athletes, the fans, the entire Olympic community, all of us are looking forward to Paris, which will truly be Olympic Games of a new era. Younger, more inclusive, more urban, more sustainable. The first Olympic Games with full gender parity. The first Olympic Games inspired, planned and delivered in line with our Olympic agenda reforms from start to finish. We all feel great anticipation. Our expectations for this Olympic Games Paris 2024 are shared by billions of people around the globe. After the COVID pandemic, people are longing to come together again. They are longing to celebrate the Olympic spirit together again. Our friends of the Paris 2024 Organizing Committee are doing a fantastic job at bringing these first Olympic Games of a new era to life in all these dimensions. The slogan, "Games Wide Open," is about creating inclusive Olympic Games in all respects. Even spectators will have the opportunity to become participants. This is how we go to where the people are now in the real world. Iconic monuments will be transformed into competition venues, bringing sport into the heart of the city. The public can take part in sports events, such as the Marathon pour tous, the Marathon for all, when 40,000 people will be able to run the same marathon route just hours before the Olympic athletes. Urban sports, like sport climbing, skateboarding or breaking, will feature prominently
right in the city center of Paris. Already 4 years ago, Paris 2024 launched an ambitious program introducing 30 minutes of daily exercise in primary schools throughout France. They are on track to reach more than 4 million children. With its Terre de Jeux initiative, Paris 2024 is promoting sport and physical activity in over 4,000 municipalities across France. Again, taking sport to where the people are. Another significant milestone will be full gender parity at the Olympic Games for the first time in history. The IOC has allocated exactly 50% of the quota places to female athletes and exactly 50% to male athletes. Paris is setting new standards also when it comes to organize sustainable Olympic Games. They are aiming to reduce their emissions by 50% compared to the average emissions of the previous Games. To achieve this, the Games will be powered by 100% of renewable energy. The Games will use 95% existing or temporary venues. With these and other measures, Paris is very much on track to achieve this ambitious goal already 6 years ahead of the global 2030 target set by the Paris Agreement on Climate Change. In our Olympic Agenda 2020, we are speaking about the uniqueness and the magic of the Olympic Games. So I invite you to imagine for one moment the uniqueness and the magic of the opening ceremony of the Olympic Games Paris 2024. Imagine and dream with me about the spectacular sights as the boats with the athletes float down the River Seine, past iconic landmarks, the Eiffel Tower, Notre Dame, the Louvre. Imagine and share the dreams of the athletes. Imagine their emotions when hundreds of thousands of people are welcoming them to the Olympic Games, celebrating them from the riverbanks. Imagine all the people living life in peace. You may say, I'm a dreamer, but I'm not the only one. We all share this dream with the best athletes of the world coming to the Olympic Games Paris 2024. There is not only an overwhelming response from all the athletes, but also from the public. This excitement is reflected in the ticket sales. The requests for tickets go far beyond the 7 million tickets that have already been sold. There is huge demand for the remaining 3 million tickets that are still to be released. People from 180 countries bought tickets so far, showing the global appeal of the Olympic Games. The world's political leaders are also voicing their support for the Olympic Games and the values they stand for. The most recent example of this is the declaration of the G20 leaders at their summit here in India. They said that they, and I quote, look forward to the Paris Olympic and Paralympic Games in 2024 as a symbol of peace, dialogue,
amongst nations and inclusivity with participation of all." End of quote. We are greatly encouraged by this commitment of the G20 leaders, for the first time, including the African Union, to the unifying peace mission of the Olympic Games. For this commitment, I would like to thank the host and chair of this G20 summit, the Prime Minister of India, His Excellency Narendra Modi. Dear Prime Minister, we have a certain idea how difficult it is to reach a consensus in these divisive and confrontational times we are living in. Congratulations and thank you, Prime Minister Modi, for your leadership and your great support for the Olympic Games. I would also like to thank the President of France, Emmanuel Macron, for his leadership and full commitment to the success of the Olympic Games Paris 2024. Not only as a signatory of this G20 declaration, but in particular for his confidence in the IOC to bring the entire world together in peaceful competition. In the same spirit, we know that we can count on our French friends who will inspire us with their great passion for sport. This unifying mission also enjoys the support from the non-aligned movement, which brings together 120 of the 193 UN member states. From so many conversations that I have with people and world leaders around the globe, I know how much they are longing for our unifying force in this highly divided and confrontational world. Our peace mission is more important than ever, with the far too many wars and conflicts that we are witnessing in our world today. So let us all together make these Olympic Games Paris 2024 this symbol of peace, dialogue, and hope for all humankind. What better place than Paris to showcase Olympic Games of a new era? Paris, the birthplace of our founder, Pierre de Coubertin. Paris, the city of light. Paris, the city of love. As Pierre de Coubertin once said, and I quote him, "The Olympic Games are a pilgrimage to the past and an act of faith in the future." The Olympic Games Paris 2024 will be exactly this, a pilgrimage to our past in the hometown of our founder, and a confident act of faith in our future. In this spirit, we live our new Olympic motto, faster, higher, stronger, together. Thank you very much. Thank you, President Bach. And now, with the greatest joy and respect, I have the honor of inviting the most Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, for his keynote address to this august gathering.
IOC के प्रेसिडेंट मिस्टर थॉमस बाक, IOC के सम्मानित सदस्य, सभी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, भारत के नेशनल फेडरेशंस के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, देवी और सज्जनों, 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आप सभी का इस विशेष आयोजन में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का ये 141वां सेशन भारत में होना बहुत ही खास है। 40 साल बाद भारत में IOC का सेशन होना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। फ्रेंड्स, अब से कुछ मिनट पहले ही भारत ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। मैं टीम भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। साथियों, स्पोर्ट्स भारत में हमारे कल्चर का, हमारी लाइफस्टाइल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। आप भारत के गांवों में जाएंगे तो पाएंगे कि बिना स्पोर्ट्स के हमारा हर फेस्टिवल अधूरा है। हम भारतीय सिर्फ स्पोर्ट्स लवर नहीं, बल्कि हम स्पोर्ट्स को जीने वाले लोग हैं। और ये हजारों वर्षों की हमारी हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, हजारों वर्ष पहले का वैदिक काल हो, या उसके बाद का टाइम पीरियड, हर कालखंड में स्पोर्ट्स को लेकर भारत की लेगेसी बहुत समृद्ध रही है। हमारे यहां हजारों साल पहले लिखे ग्रंथों में 64 विधाओं में पारंगत होने की बात कही जाती है। इनमें से अनेक विधाएं खेलों से जुड़ी हुई थी, जैसे हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, स्विमिंग, रेसलिंग। ऐसी अनेक स्किल्स को सीखने पर बल दिया जाता था। आर्चरी यानी धनुर्विद्या को सीखने के लिए तो पूरी एक धनुर्वेद संहिता ही लिखी गई थी। इस संहिता में एक जगह कहा गया है, धनुष चक्रंच कुतंच खड्गंच छुरी का गदा सप्तमम बाहु युद्धम शादेवम युद्धानि सप्तधा। यानी धनुर्विद्या से जुड़ी 7 प्रकार की स्किल्स आनी चाहिए, जिसमें धनुष बाण, चक्र, भाला यानी आज का जैवलिन थ्रो, तलवारबाजी, ड्रैगर, गदा और कुश्ती शामिल है।
साथियों, स्पोर्ट्स की इस हजारों वर्ष पुरानी हमारी लेगेसी के अनेक साइंटिफिक एविडेंस है। जहां मुंबई में अभी हम हैं, वहां से करीब 900 किलोमीटर दूर कच्छ में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है धौलावीरा। धौलावीरा 5000 साल से भी पहले एक बहुत बड़ा और समृद्ध पोर्ट सिटी हुआ करता था। इस प्राचीन शहर में अर्बन प्लानिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक शानदार मॉडल मिला है। खुदाई के दौरान यहां 2 स्टेडियम सामने आए हैं। इनमें से एक तो दुनिया का सबसे पुराना और उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। 5000 साल पुराने भारत के स्टेडियम में एक साथ 10,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। भारत की एक और एंशियंट साइट राखीगढ़ी में भी स्पोर्ट्स से जुड़े स्ट्रक्चर्स की पहचान हुई है। भारत की ये विरासत पूरे विश्व की विरासत है। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स में कोई लूजर नहीं होता। स्पोर्ट्स में सिर्फ विनर्स और लर्नर्स होते हैं। स्पोर्ट्स की लैंग्वेज यूनिवर्सल है, स्पिरिट यूनिवर्सल है। स्पोर्ट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं है। स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटी को अपने विस्तार का अवसर देता है। रिकॉर्ड्स कोई भी तोड़े, पूरी दुनिया उसका स्वागत करती है। स्पोर्ट्स हमारे वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के भाव को भी सशक्त करता है। इसलिए हमारी सरकार हर स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन और जल्द आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसके उदाहरण है। हम भारत में खेलों के विकास के लिए इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी पर भी लगातार फोकस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स को लेकर भारत के इसी फोकस के कारण आज भारत इंटरनेशनल इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पिछले ओलंपिक्स में कई भारतीय एथलीट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हाल में संपन्न हुए एशियन गेम्स में भारत ने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी है। उससे पहले हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हमारे यंग एथलीट ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ये भारत में बदलते और तेजी से विकसित होते स्पोर्ट्स लैंडस्केप का संकेत है। साथियों, बीते वर्षों में भारत ने हर प्रकार के ग्लोबल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के अपने सामर्थ्य को साबित किया है।
हमने हाल ही में चेस ओलंपियाड का आयोजन किया, जिसमें विश्व के 186 देश शामिल हुए। हमने फुटबॉल अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और शूटिंग वर्ल्ड कप की भी मेजबानी की। भारत हर वर्ष दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में से एक का भी आयोजन करता है। इस समय भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है। उत्साह के इस माहौल में सभी लोग ये सुनकर भी खुश हैं कि आईओसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की सिफारिश की है। हमें उम्मीद है इस बारे में जल्द ही हमें कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगा। साथियों, ग्लोबल इवेंट्स का आयोजन हमारे लिए दुनिया भर के देशों के स्वागत का मौका होता है। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और अपने वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए भारत तैयार है। ये दुनिया ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी देखा है। देश भर के 60 से अधिक शहरों में हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। ये लॉजिस्टिक्स से लेकर हर प्रकार की हमारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का प्रमाण है। इसलिए आज मैं आप सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक्स से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। फ्रेंड, स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल जीतने का नहीं, बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। स्पोर्ट्स सबका है, सबके लिए है। स्पोर्ट्स सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता, बल्कि पीस, प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है। इसलिए स्पोर्ट्स दुनिया को जोड़ने का एक और सशक्त माध्यम है।
मैं ओलंपिक्स के मोटो को फिर आपके सामने दोहराऊंगा, फास्टर, हायर, स्ट्रांगर टुगेदर। आईओसी के 141वें सेशन में आए सभी अतिथियों का, अध्यक्ष थॉमस बाक का और सभी डेलीगेट्स का मैं फिर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। आने वाले कुछ घंटों में आपको अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं। आई नाउ डिक्लेयर दिस सेशन ओपन। Thank you, Honorable Prime Minister, for your inspiring address. We now request the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and the International Olympic Committee President, Mr. Thomas Bach, to please kindly take their seats in the Grand Theatre with our esteemed dignitaries. My dear friends and distinguished guests,